Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। तेबे ता पूर्वरु लेट अस सी व्हाट इज योर थर्मल कंडक्शन एक्चुअली और हीट कंडक्शन। सो आमे जानिचु जेतेबेले हीट ट्रैवल करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तीनटा प्रकार एटा हेई पारे। गोटे हला कंडक्शन, गोटे हला कन्वेक्शन आ गोटे हला रेडिएशन। सो in conduction process heat flows from one particle of the body to another in the direction of fall of temperature माने जो पटे टेम्परेचर कम थिबो सेही पटे हीट रो फ्लो डायरेक्शन रहिबो हला विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल किंतु पार्टिकल रो मूवमेंट विजिबल हेबो नाही हला। नाउ इफ वी प्लेस वन एंड ऑफ ए रॉड सपोज इन फायर हला obviously a good conductor of heat से बड़ा गोटे रड नेमा गोटे मेटाल रड सपोज है तार गोटे मुंड को आम निआ आड़ को देखेदेला देन एबे कौन हम आफ्टर सम टाइम द हीट विल बी कंडक्टेड टू द अदर एंड ताहले एबे अदर एंडटा एबे हमको धीरे धीरे करी तातीबो। ओके, हेंस whenever two parts of a body are at different temperatures temperature जेतेबेले डिफरेंस रहउची then heat flows takes place from a region of higher temperature to the region of lower temperature and this process is known as the conduction of heat. Also you can explain it by using the kinetic theory according to which the molecules of a body are in constant oscillatory motion about the equilibrium or mean position जोटा है। सो मॉलिक्यूल गुड़ा निजर मीन पोजिशन को लेकिन ऑसिलेट करूँ कॉन्स्टेंटली एंड व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर हीटेड और एट द हीटेड एंड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सोर्स देन देयर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी वंस इंक्रीज है माने एबे मॉलिक्यूल गुड़ा आहरी बेसी जोर रे वाइब्रेट करिवे दे बिगिन टू वाइब्रेट फास्टर एज दे वेर वाइब्रेटिंग बिफोर। So ebe कौन हम molecules now on colliding with their slower moving neighboring molecules माने जो molecule टा एबे जोर रे वाइब्रेट होची सपोज ता पाखरे गोटे molecule टिके धीरे comparatively वाइब्रेट होची ता सहित एबे कोलाइड हम so they transfer a part of their energy to them हला जोटा slowly वाइब्रेट होची ताको माने गोटे part of energy transfer कर देबे so that will now start oscillating more quickly. So एही हिसाब रे तमरो heat conduction टा हुए and show a rise in temperature. So it will also show a rise in your temperature. So आमे देखिला जे एही हिसाब रे by means of collision and transfer of heat to the molecules गोटे सेक्शन रू आ गोटे सेक्शन को एमती हीट टा फ्लो हुए आ एही प्रोसेस टा कंटिन्यूअसली चली थिबो केते बेला पर्यंत till the heat reaches the most distant part of the rod. So जे कौन सी बॉडी नियो which should be a good conductor of heat ताले heat conduction पूरा जेतेबेले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट न आसीची सेही हिसाब रे हीट कंडक्शन कंटिन्यूअसली चली थिबो हैला। सो द कंडक्शन ऑफ हीट एनर्जी डिफ्यूजेस थ्रू a body by the action of molecules which possess greater kinetic energy आ सेही जो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी रो मॉलिक्यूल्स अच्छी सेठू पुणी कंडक्ट हेबो कहा को ना मॉलिक्यूल्स हैविंग लेसर काइनेटिक एनर्जी। सपोज हमें एग्जांपल लेला इन केस ऑफ सॉलिड्स देन इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर हैला सॉलिड्स आर आल्सो द इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स। सो एई जगह रे कंडक्शन ऑफ हीट हेई थाए बाय मींस ऑफ
इलास्टिक बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन द एटम्स है एटम एटम भितर जो बाइंडिंग फोर्स अच्छी इलास्टिकाली ता द्वारा हीट कंडक्शन होता है नेक्स्ट एग्जांपल रे आमे जदि कहिबा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स व्हिच आर मेनली मेटल्स ए जगह रे हीट कंडक्शन टा होता है बाय मीन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are able to move throughout the material so आमे जानिछु इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बा मेटल रे फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत बेसी थाए and they are free to move from one part to another throughout the material so ए जो इलेक्ट्रॉन गुडा कोन करिवे they will carry the energy readily from the hotter side to the colder side and in fact this is the main mechanism of heat conduction in metals so it बहुत गुटे important question free electron द्वारा heat conduction होता है metal रे मतलब भाइबा क्वेश्चन एटा नाउ इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट generally the materials which are having good conductors of electricity are also good conductors of heat ତେଣୁ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲଟା ହିଟ୍ର ଭଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବି ଭଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ବର୍ସା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏବେ ଦେଖ steady state so suppose we take a rod and heat it let the rod be of uniform area of cross section at one end है सो गोटे एंड रे आमे याको हीट कला सो ऊपर आमे जो पढ़िला एबे कोन हबो each section of the rod will receive heat from the adjacent cross section towards the heated end by the process of conduction माने hotter region ru colder region को heat flow हबो है so this heat will be spent in three ways एटा तीनटा प्रकार एई हीट रो खर्च हेई थाए गोटे पार्ट कोन हबो ना it will be absorbed by the cross section in order to increase its temperature second part कोन हबो it will be escaped out of the sides of cross section और third part रे कोन हबो it will be conducted to the next section अच्छा ए जो हीट रो फ्लोटा होउची एटा डिपेंड करूची तमरो डिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ ए क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द हीटेड एंड रू गुटे क्रॉस सेक्शन रो डिस्टेंस जेते बेसी हबो मोर हीट विल बी लॉस्ट केमती लॉस्ट हबो बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन बा विकिरण हैला फ्रॉम द पार्ट ऑफ द रॉड बिटवीन द हीटेड एंड द पार्टिकुलर सेक्शन हैला सपोज एटा गुटे रॉड अछि हैला एठी सपोज एटा हैला पॉइंट ए एटा हैला पॉइंट बी पॉइंट ए को आमे सपोज हीट करिचु एबे पॉइंट बी आड़ को हीट फ्लो हबो ना ड्यूरिंग दिस फ्लो ए जो ए आ बी रो डिस्टेंस जिते आमे पढ़ेबा ए मझिरु हीट टा रेडिएट करि जिवो हैला एंड दिस हीट विल बी लॉस्ट ओके सो यहाँ द्वारा कोन हबो टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज करिवो हैला सो आफ्टर सम टाइम गोटे स्टेट आसीबो ना ए स्टेट रे कोन हबो इट विल बी a state when the temperature of each point of the rod becomes stationary माने constant temperature पळे आसीबो and it is known as the steady state so in this state no heat is absorbed by the rod okay so the heat reaches any section is transferred to the next except को condition रे some heat that may escape from the sides जेतेबेला पर्यंत किछिटा heat कौनसी साइड रो एस्केप न करूची गोटे सेक्शन रो आ गोटे सेक्शन को ट्रांसफर भी हीट रो हेई परिबो नाही ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट हेंस वी कैन से दैट इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर एट ईच पॉइंट ऑफ द मीडियम इज स्टेशनरी और कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ हीट फ्लो इज सेम ओके आकु बढ़िबा एबे आसीबा हमर आजिरो मूल टॉपिक को द थर्मल कंडक्टिविटी और द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यार expression bar kariba it is very easy for this we have considered a parallel faced slab of a solid material having area of cross section this one let us say that it is a hala let us say this slab is having a thickness x this one okay thickness हेगला x अच्छा यार जो दुईटा फेस देखुच गोटे लेफ्ट फेस अच्छी गोटे राइट फेस अच्छी ताको आमे डिफरेंट टेम्परेचर रखिला गोटे θ1 आ गोटे θ2 स्टेडी टेम्परेचर नीचु सच दैट θ1 इज ग्रेटर देन θ2 माने लेफ्ट फेस टा एबे हायर टेम्परेचर रे अच्छी कंपैरेटिवली टू द राइट फेस व्हिच इज एट लोअर टेम्परेचर एबे कोन हबो आमे जो ऊपर पढ़िला हीट फ्लो करिवो फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड दैट मीन्स द हीट विल फ्लो through the slab from
the phase at higher temperature to the phase at lower temperature in the direction of fall of temperature माने एई पटे हीट टा फ्लो हबो. अच्छा ता सहित गोटे assumption नबा कोन ना no heat is lost from the sides of the slab and the lines of flow of heat be at all points normal to the face of the slab ହେଲା. सो एटा जो तुम देखुच एटा होची स्लैब रो फेसटा याकू नॉर्मल करिकी ही हीटटा फ्लो करूची ହେଲା. आउ तुमरो स्लैब रो ए जो साइड पटोटा ए पटरु किछि भी हीट लॉस हेउ नाही ହେଲା. सो द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक दिस. ओके. अच्छा नाउ इन द स्टेडी स्टेट आमे जानिचु सपोज जदि गोटे क्वांटिटी ऑफ हीट Q आसिला and it is entering the phase in a given time, then it is equal to the heat leaving the other phase in the same time केते बळे ना steady state रे. अच्छा experimentally observe करा जाइछि जे ए जो quantity जो Q हैला it flows from one phase to other and it is proportional or it is dependent to the following quantities like directly proportional to the face area or area of cross section A, directly proportional to the temperature difference माने theta 1 minus theta 2 between the phases and directly proportional to the time t of heat flow and also it is inversely proportional to the thickness of the slab which is x. So याको एबे एका संगरे लेखिले कोन हबो q is proportional to a theta 1 minus theta 2 into t divided by x. याको आमे लेखि परिबा q is equal to k into this much of quantity. Okay, so ये जो constant k आसिला it is the constant of proportionality and it is that constant which is known as the coefficient of thermal conductivity or thermal conductivity of the material. So आमे एठी जो स्लैब टा यूज कला तार नेचर ऑफ मटेरियल उपरे एई थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करिवो हैला. सो को नेचर ऑफ मटेरियल तमे नोचो गोटे बॉडी रो तारी उपरे तमरो थर्मल कंडक्टिविटी रो वैल्यू डिपेंड करूची. आ गोटे जिनस मने रखो द थर्मल कंडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ इट्स हीट कंडक्टिंग पावर. गोटे मटेरियल रो हीट कंडक्टिंग पावर को दर्शाए थर्मल कंडक्टिविटी. अच्छा ये जो इक्वेशन हमें ऊपर पाइला इक्वेशन 3.79 for the value of heat in terms of thermal conductivity it is known as the fundamental equation of conduction of heat. एठू हमें thermal conductivity रो गोटे alternative definition भी पाई परिबा. Suppose we take a equal to 1 square centimeter, theta 1 minus theta 2 1 degree Celsius, t equal to 1 second and x equal to 1 centimeter. ताले एबे इक्वेशन टा रिड्यूस करि जिवो as q equal to k. That means the thermal conductivity or the coefficient of thermal conductivity of a substance is defined as the rate of flow of heat across it per unit area per unit temperature gradient. Temperature gradient means temperature divided by length जोटा. अच्छा इट्स यूनिट जदि आमे देखिबा थर्मल कंडक्टिविटी रो यूनिट को सीजीएस सिस्टम रे यार वैल्यू आछि कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकंड पर सेल्सियस. अच्छा एमकेएस सिस्टम रे किलो कैलोरी पर मीटर पर सेकंड पर सेल्सियस. अच्छा आकु बढ़िबा ए जो देखो थर्मल कंडक्टिविटी अछि गोटे मटेरियल रो ता सहित ये रिप्रेजेंट करछि विथ द इज how a material can conduct heat from a region of higher temperature to a lower temperature. माने केते सहज भाबरे गोटे हॉटर रीजन रु गोटे कोल्डर रीजन को हीट टाको गोटे मटेरियल फ्लो करि पारुची और कंडक्ट करि पारुची that is decided by the thermal conductivity of that material. ओके सो आमे जदि कहिबा सपोज गोटे मटेरियल नेबा जहार कि थर्मल कंडक्टिविटी k रो वैल्यू लार्ज अछि. That means आमे कहि परिबा that it is a good conductor of heat. Similarly गोटे जदि मटेरियल नेबा जहार कि k रो वैल्यू स्मॉल अछि ताहले एटा होची गोटे पुअर कंडक्टर और यू कैन से दैट इट इज एन इन्सुलेटर. अच्छा जमती कहली ए जो रेशियो थीटा 1 माइनस थीटा 2 by x it is the rate of change of temperature with respect to distance. So it is known as the temperature gradient. You can write it as minus d theta by dx. It is जो minus symbol टा कहीं आसिला because it is indicating that the temperature decreases with the distance. Distance जेते बढ़ी बढ़ी जीवो temperature टा सेति की कमी कमी जीवो.
सो देख एठी जो आम टेम्परेचर ग्रेडिएंट रो वैल्यू पाइला माइनस डी थीटा बाय डी एक्स या आम उपरे पाइथिबा हीट इक्वेशन रे पुट करि परिबा जो थे कि एठी थीटा वन माइनस थीटा टू बाय एक्स को आम रिप्लेस करि परिबा बाय माइनस डी थीटा बाय डी एक्स. So एठी after putting this value the equation will be reduced like this. So q रो value आसीगला माइनस के ए डी थीटा बाय डी एक्स इंटू टी. अच्छा आम जदि या डिफरेन्शियल नहीं जावा ताहले डी क्यू रो वैल्यू है माइनस के ए डी थीटा बाय डी एक्स इंटू डी टी. सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यार वैल्यू है केते डी क्यू बाय डी टी माने हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम केते बाहर यार वैल्यू माइनस के ए डी थीटा बाय डी एक्स. गोटे जिन मन रख रेसिप्रोकाल जदि आम नौ थर्माल कंडक्टिविटी दैट इज 1 बाय के देन इट इज कॉल्ड थर्माल रेजिस्टिविटी. मन पका तुम प्लस टू रे भी पढ़ी जमती रेजिस्टेंस रेसिप्रोकाल कह जाऊला कौन कंडक्टेंस. सिमिलारली रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकाल कंडक्टिविटी. अच्छा एबे देखिबा टिके आमे थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी माने कौन. देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम. दैट इज the thermometric conductivity equal to thermal conductivity divided by thermal capacity per volume. So याको आमे रिप्रेजेंट करिबा जदि by small k ताले it is given by k by rho s हला. एटी रो हे गला तमरो डेंसिटी मटेरियल रो आ s हे गला तमरो स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल. ओके थैंक यू.